Hey everyone, hi, good evening. How is everybody doing? I understand it has been a very long time. How are you guys? मेरे बिना कैसे गुजारा हो रहा था आप लोगों का? Hi. Hello Ritik, hi, good evening. Alright, this is our first lecture on the time, speed and distance. This is the Propel batch. I understand the propeller was a little down for a couple weeks, but I guess it's time for us to giddy up, get back on the cat horse. My name is Amit Surana. I am an aeronautical engineer from Chennai with over 6 years of experience teaching quantitative aptitude across different platforms, and I've also trained over 2 lakh students. Damn, does it feel good to say this again. Please don't forget to follow #CAT Live daily the next time you're on Instagram. While you're at it, please get yourselves added to these 2 groups on Telegram, which will give you all updates on upcoming sessions and anything that we have planned with regards to your MBA prep. Flow mein to aa rahe haha. If you also want to see yourselves here the next year, all you have to do is pick up one of our value services. These are the batches, upcoming batches that we have planned for y'all. There's one starting on the 8th of Feb, which is a percentile batch for CAT 2021. This is a weekday evening batch. There's an exclusive weekday evening batch also going on where I'll be taking quantitative aptitude. We'll be doing time and work and time, speed, distance here. And I also will be a part of another batch which will happen on the weekends. The weekend batch would go on from 2:30 p.m. to 4:30 p.m. and this one will go on from 6:30 p.m. till 8 p.m. This is from Monday to Friday. This one would be Saturdays and Sundays. This batch is starting on the 10th of Feb, the other one on number system. So I'll be taking number systems here. The number system batch will start on the 13th of February. Please get yourselves added to these batches if you are already a plus subscriber. If you are not, then this is a very good time for you all to go ahead and make that decision. You can take the CAT subscription, use my referral code Surana Live. The top ones are the 12-month and the 24-month packages. If you do take these with my referral code, you will get a slashed price of 10%. That means for now, 15,750 you'd get the 12-month package, and 18,900 you'll get the 24-month package, less than 800 rupees a month. If you are also looking at getting yourself some personalized coach, a mentor who would be with you every step of the way to help you with your MBA prep, then you can go for the iconic subscription, which are available in 2 variants, 12 months and 24 months one. Here also my referral code Surana Live would come into picture. If you use this, these prices will also get slashed. That means for about 2,250 or 3,000 rupees a month, you would now be able to get not just your CAT prep and other management entrance tests, you will also be able to make use of or get benefited from a lot of mentors who have been alumni from IIM. So don't forget to use Surana Live the next time. Anytime, in fact, if the app comes and asks you, bro, सुन ना, मेरे को एक referral code देना, मेरा code use करना है, ठीक है? कहीं पर भी, whether it's quizzes, special classes, whatever, कुछ भी, वो आपका नाम भी पूछे तो सुराना लाइव बोल देना, नहीं मत बोलना. Okay, चालू करें. Hi guys, hi. Yeah, Ritik, finally. Hi Tanesh, good evening. Hello Mrinmay. Hi Captain. Hello Dhruv, बहुत दिन. Yes, I am feeling so much better now. Energy दिख रही है, energy feel हो रही है क्या? I'm feeling so much better now. I'm doing great. Nikunj, thank you so much. Hi Mansi. Hi Shreya. If this is your first live session, then you are welcome. But I also hope that you watched our previous videos so that you would be able to understand some of the concepts that we'll be using today. Hello Shweta. Hi Milan. Hello Akshay.
मॉल में भी चलेगा सुराना लाइव, ओनली थिंग इज पहले आपको बाहर निकालेंगे, फिर मेरे को ढूंढेंगे और मेरे को भी बाहर निकालेंगे। हाय फातिमा, अरे मिलन क्या है बताओ यार, छोड़ो जान दो, नहीं बताऊंगा। नहीं, आई जस्ट फेल अंडर द वेदर, आई वॉज फीलिंग अंडर द वेदर। चलो चालू करेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस। सो फार दिस विल बी आवर लास्ट चैप्टर फ्रॉम arithmetic. So far we've completed percentages, profit and loss, SI and CI. We've also looked at stocks, we've also looked at installments, which are a part of SI CI, let's say, and then we've looked at ratios and proportions. और क्या क्या किया था guys हम लोगों ने, इसके अलावा और क्या क्या किए थे अपन ने? रेशियो प्रोपोर्शन तो भूल गया मैं, थोड़ा उम्र हो गई, एज हो गई, बाल कलर नहीं करवाया। बताओ इसके अलावा और क्या क्या किया था अपन ने? रेशियो प्रोपोर्शन, फिर हाँ टाइम एंड वर्क, एवरेजेस, वी लुक्ड एट एवरेजेस, वी लुक्ड एट एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स एंड टाइम एंड वर्क. We've also done pipes and cisterns as a separate one, but it's a part of time and work. So all of this we are done. Now it's time for us to wrap the entire arithmetic part by completing time, speed and distance. Are you guys ready? Thank you so much guys. चलो शुरू करेंगे. Superb Shreya, if you have been studying from my previous lectures then very good. चलो करेंगे शुरू, गणपति करते हैं इसका. Let's first talk about time, speed and distance. We've looked at one variable, one variation of this concept which is time and work. जहाँ पे अपन work कर रहे थे, यहाँ पे the work is to basically cover a distance. The efficiency at which a work is done in this case is the speed at which a distance is covered. So we all know that speed is nothing but the amount of distance covered in unit time. Yes, this becomes our speed. Now with time, speed and distance we will be talking about the relationship between these. We will be looking at units and how to convert them. We will also be looking at a concept called average speed. I hope you guys are ready for today's session. काफी बेसिक है बट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, तो इफ यू आर रेडी ड्रॉप इन अ यस, ऑल्सो ड्रॉप इन अ लाइक ऑन दिस वीडियो. Yes, what we have learned speed as in our school is velocity. If you remember, anybody who's taken science or was affected by this, we had studied what velocity is, right? Velocity is nothing but displacement over the unit of time, correct? So that's basically it. Yeah, this is what we'll be looking at. तो करेंगे चालू. Right, let's first start with a basic example. छोटा सा example है just for us to get our engines warmed up. If you understand, pun intended, engines warmed up. Oh sorry, इनमें पीछे होते हैं, sports cars में पीछे होते हैं engines, आगे यहाँ पे ट्रंक होता है. बट एनीवे चलो करेंगे चालू. गुड इवनिंग, हाय इंद्रजीत, हेलो सोमेश, हाय आयुष, हेलो ध्रुव, ग्रेट. चलो हाय अव्यव, सी 60 60 60 सी 60, हाय स्टडी फॉर चेंज. ब्यूटिफुल गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 60 kilometers an hour. So what I'm saying, if a car can travel 20 kilometers in a time period of 20 minutes, what is its speed? Yes, so normally if we look at the unit of the speed, here we have kilometers per hour, per hour, per hour, per hour. That means the time that we have, that needs to be converted in terms of hours, right? 20 minutes. And how much distance is covered in that time? 20 kilometers. Yes, so in 20 minutes 20 kilometers is covered. That means in 1 hour, that is what, 60 minutes, thrice how much distance would be covered? Thrice the distance would be covered, right? So we would have 60 kilometers. So the speed becomes what? How many kilometers every hour? In 1 hour, 60 kilometers. Ultimately the speed becomes what? 60 kilometers per hour.
Yeah, I understand this is just basic, we're just getting ourselves warmed up. Don't worry, don't start leaving just yet. Advanced concepts bhi karenge aaj, don't worry, theek hai? Chalo, let's move on. Let's talk about the units. Yes, the major thing that we have to worry about with units is when it comes to conversion. तो फटाफट से देखेंगे units के बारे में. Yes, can anyone tell me what is the SI unit of speed? SI unit क्या है? किलोमीटर्स पर. जल्दी से बोलो, SI यूनिट क्या है ऑफ स्पीड? स्पीड्स SI यूनिट, एनीवन? किलोमीटर पर किलोमीटर पर the actual SI unit for speed is not kilometer per hour, but it is meter per second. Yes, it is not kilometer per hour, it is meter per second. But then since 1 second calculation for every second becomes a little too tiring, a little too traumatic as well, that is why people have moved from meter per second to what? They've shifted to kilometers per hour, right? This is the preferred one, preferred unit of speed, but then this is the SI unit. Got it? Yeah. If you are American or if you follow the Americans, then it would be miles an hour, right? Miles per hour. We don't really have to worry about this, because if at all there is a question that asks us to convert kilometers to miles or meters to miles, they would give us a conversion. We don't have to worry about that. Let's worry about this. Yes, how do we convert 1 kilometer per hour to meter per second? Yes, so let's look at this. 1 kilometer per 1 hour. Yes, we want to convert this in terms of meter per second. 1 kilometer is how many meters? 1000 meters. Yes, and 1 hour is how many seconds? 60 seconds. Am I right? Yes guys, 1 hour is what? 60 seconds. Am I right? Yes, it is 3600 seconds. Common mistake hai. 1 hour is 60 minutes, 1 minute is 60 seconds, so 1 hour is 3600 seconds, which basically gives us 5 upon 18. So what do you get? You get 1 kilometer per hour is basically 5 by 18 meters per second. Yes, so if we ask you how much is x kilometers per hour, it will be 5 times x by 18 meters per second. Yeah, the other way around would be what? If we were to go back, 1 meter per second or x meter per second would be equal to how much? The inverse of it, 18 by 5 kilometers per hour. Yes, times x. Cool. Hi Siddharth. Yeah, after a very long time, in fact. Chalo, beautiful. So 1 kilometer per hour is 5 by 18 meter per second. 1 meter per second is 18 by 5 kilometers per hour, something that we've established. Now let's quickly use that here. 3 minutes are a little too much for this. Timer hata dete. फटाफट से करो ये वाला. Quick, quick, quick. Indrajit, see, your academic scores matter, of course they matter, but then they don't take up a majority of your selection criteria. If you still want to talk about this in detail, drop a message in the Telegram group and I'll help you out there. 90, 90, 90, 90, everybody, beautiful. So everybody says the answer is option C, 90. And then somebody says 18. Avyav, Ritik, Vedant say 18. Oh, पहले भी 18 बोला है बहुत लोगों ने. Okay, Milan is the only one who said 90. Okay, so let's quickly deal with this. Pete can ride 300 meters. Yeah, so what's the distance he travels? 300 meters in 1 minute. Yes. What is his speed? Can I write this as 300 meters in 1 minute? Can I write this as 300 meters in 60 seconds?
Yes, so in terms of meters per second, what do we have? 300 by 60, that is 5 meters per second. Yes, but then what are they asking us? They're asking us in terms of kilometers per hour. So all you have to do is convert this into kilometers per hour. Simple as that. Yeah. So how do you convert? X meters per second is basically 18 by 5 kilometers per hour. Yes. So 5 meters per second in terms of kilometers per hour would be how much? 5 into 18 by 5 kilometers per hour. 5s goes off, so you have 18 kilometers an hour. Yeah, so your answer is option B, 18 kilometers an hour. Anybody who said 90? Anybody who said 90, एक बारी check कर लो guys. 90 is not your answer, 18 kilometers an hour. Yeah. इंद्रजीत, टेलीग्राम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में है भाई. टेलीग्राम लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन में आपको फॉलो सुराना लाइव टेलीग्राम चैनल पे लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर लो. Yeah, so 90 is not the answer guys, 18 kilometers per hour. This will be the faster way of doing it if you really want to convert seconds into hours and then convert minutes into meters into kilometers. Be my guest, but this would be a faster way of dealing with this. Now let's move on to the next concept where we talk about the relationship between the three entities, time, speed or distance ka relationship. Right, Milan? That's one good thing about a session in which in my session is that a lot of people see themselves in traps. In most cases I don't even lay those traps, but then they still find themselves there. चलो रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे, नॉट जनरल रिलेशनशिप, नॉट कि आपका कैसा चल रहा है, वो रिप्लाई कर रहे नहीं कर रहे, फ्रेंड जोन कर दिए नहीं कर दिए, not that relationship, but let's talk about relationship between time, speed and distance. Yes, so क्या होता है यहाँ पे? We all know that speed is nothing but distance over time. Yes, so with this you clearly understand that if your okay, चलो पहले distance distance is equal to speed into time करेंगे, right? First let's figure out what happens if time is constant. If time is constant, let's say if I have only 1 hour, मेरे पास सिर्फ एक ही घंटा है, right? I have only 1 hour. In this 1 hour, if I travel at a speed of 50 kilometers an hour, कितना distance में cover कर लूँगा? I'd be able to cover 50 kilometers. Yeah, but now if I travel at, let's say 100 kilometers per hour, if I double my speed, then what happens to the distance that I'd be able to cover? That also gets doubled, है ना? So we cover 100 kilometers at a speed of 100 kilometers per hour. So what happens? If time is constant, then speed and distance, or let's call it the other way around, distance and speed are directly proportional. Yes, if distance increases, speed increases, distance decreases, speed decreases in the same proportion. Yeah. Further, if I say that, okay, now this time let's say that the speed is constant. Yes, I am allowed to travel only at 50 kilometers an hour. Now if I have 1 hour to cover, if I have 1 hour of time, then how much distance would I be able to cover in this? 50 kilometers. What if now I have only half an hour? If I have only half an hour, if my amount of time goes half, what happens to the distance? It also goes half, right? Because the longer I drive, the longer I'd be able to cover, है ना? 25 kilometers, right? So what happens here? Distance and speed, right? If speed is constant, then distance and time are directly proportional. Yes, तो क्या हो गया ये? Distance is directly proportional to speed. By whatever proportion distance increases or decreases, the same proportion speed will also increase or decrease. Yeah. Now the fun part, sorry, the fun part about this is what happens? Sorry, what happens when you have the other way around? Speed is distance over time. If I say the distance is constant, if I say I have to cover 100 kilometers by hook or by crook,
कैसे भी करके मेरे को 100 किलोमीटर्स कवर करना है. इफ आई हैव 1 hour टू कवर इट, then I can drive at what speed? 100 kilometers per hour. Yes. Now let's say that I am in very much leisure. Now I have complete 2 hours to complete it. Yes, if I have 2 hours to complete it, then do I really need to travel at a speed of 200 kilometers per hour? Not really. Why? हाँ sorry, distance to time. हाँ समझ गए ना क्या गाइस, समझ गए ना? चलो ठीक है. हाँ ठीक है. फ्लो में इज दिस राइट? इफ माई टाइम गोज डबल, द स्पीड विल ऑल्सो गो डबल? ना. इफ आई ड्राइव फास्टर, I will take less time to cover a distance. If I drive slower, then I'll take more time to cover the distance, right? So what happens? If your time goes double, then the speed goes half. Yes, so what happens here? When distance is constant, when a constant distance is to be covered, then speed and time are inversely proportional. That is, when speed increases by some proportion, time will reduce by an inverse proportion. Got it? So when they are inversely proportional, all rules of inversely proportional entities will apply here, including what? Our beloved A by N rule. सबसे प्यारा A by N rule है ना, वो भी लगेगा. Let's put this into use. पहला question try करो जल्दी से. Sorry guys. Quick guys, quick. शिनचैन हमारा. Beautiful guys, superb. So I'll say the answer is D, 25% decrease in the time. Yeah, superb guys, very good. So we all know by A by N rule, अगर कुछ 1/3 से increase हो रहा है तो the inversely proportional entity will decrease by 1/3 plus 1, है ना. But let's do it with an example to begin with from scratch, है ना. एक example लेते हैं. Let's say that I have to cover 30 kilometers. Yes, and I use चलो 30 नहीं, let's say 120 kilometers. I want to cover 120 kilometers and I travel at a speed of 30 kilometers per hour. कितना टाइम लगेगा ये कवर करने के लिए? 4 hours. Yes. What if I have to now cover the same 120 kilometers? Distance में कोई change नहीं है, distance is constant, but now I have to increase the speed by 1/3. 1/3 of 30 is how much? 10. So now our speed becomes 40 kilometers an hour. तो टाइम क्या हो जाता है? Time goes down, right? Down by how much? 120 by 40 is 3 hours. So what is the decrease from here to here? 1 hour decrease for every 4 hours, right? 1/4 is nothing but 25%. So 25% decrease in the time taken. Or you can be a jolly good person, directly use what? A by N rule. Yes, this applies for all inversely proportional terms, that if distance is constant, ये ध्यान में रखना है आपको कि distance has to be constant, then if your speed increases, then the time decreases. Speed increases by A by N, then the time will decrease by A by N plus A. This is your A by N rule. For people who do not know this, 1/3 increase पे time कितना decrease हो जाएगा? 1/3 plus 1, which is 1/4 decrease. 25% decrease. Done? Yes. See, all these small concepts, ये सारे जो छोटे छोटे concepts है वो बड़े बड़े question में लगाने में मजा भी आएगा, and it will make the question solvable as well. Yeah. Quickly do this. उसेन भैया आपके पास पहुंचने के पहले फटाफट से कर लो खत्म ये वाला क्वेश्चन. क्विक. सॉरी, so much sorry guys, so much sorry, very much sorry.
Also cheers guys, cheers everybody. आ जाओ guys, करो सॉल्व जल्दी से. This is a theta question. जे theta question है. Answer it in terms of minutes. Minutes में आंसर करना. Nikun says 20/3. Mansi says 20/3. Others? Others guys? Superb. 20/3, 20/3, 6.67. All right, Akshay. और कोई? Superb guys, very good. So what are they saying? Look at this. Running at 2/5 as usual speed, Bolt reaches the finish line 10 minutes late. Yeah. पहले हम इसको equation से करेंगे. Let's first do it with the help of equations. हाँ? क्यों? क्योंकि है equations है, option तो क्यों ही नहीं use करेंगे, right? Let's assume that the initial distance d is basically s kilometers per hour or s meters per second, whatever, into t hours, t minutes, जो भी. Yeah, this will be our first case. Second case क्या हो जाएगा? अब क्या हो रहा है? Distance same है, same ही distance cover कर रहे हैं, but at what? 2/5 of the usual speed. Yes, and covering this at how many minutes? T plus 10 minutes. है ना? T plus 10 minutes. This is our second equation. Now we can equate these two because the distances are the same. So speed into time is basically 2/5 times s into t plus 10. So what do you get here? S gets cancelled off. You have 5 times t is 2 times t plus 20, or time is equal to 20/3 minutes. Yes, which you can approximate it as what? 6.67 or 667, जैसे भी पूछा गया, approximate it. This is your standard equations वाला method. Yeah. What if you don't really want to use equations because time consuming, of course, and also the load of solving them. Now let's use, you can also use ratios here if you want. आप यहाँ पे ratio use कर सकते हो. Yes, if we use ratios, then what happens? Look at this. If the speed becomes 2/5, yes, speed क्या हो जा रहा है? Speed becomes 2/5. तो time क्या हो जाएगा? Time will become 5/2. Yes. The new time is 5/2 times t. Old time was t. दोनों के बीच में difference कितना है? 10 minutes, क्योंकि 10 minutes late पहुंचा है वो, है ना? 10 minutes. So what do you get here? You get 3t is equal to 2 उधर चला जाएगा 20 minutes, और t is equal to 20/3 minutes. Yes. You can also use the a by n rule. You can also use the a by n rule. Only thing you have to be very much careful about is the speed becomes 2/5. It does not reduce by 2/5, it becomes 2/5. That means the time will increase by 2/3. Are you understanding? वो नहीं करेंगे, बहुत confusing है. चलो next, quickly try this. नहीं तनिष्क, allegation से वो नहीं हो सकता. You're not mixing things up. You do not even know the average. वहां पे average का कोई लेना देना ही नहीं है. Mansi says 7.5. Others? Somesh says 3 kilometers. Okay. अपने पास आंसर्स आ रहे हैं. We have 7.5,
3 others. So much cheating करता है. रोहित मिलन से 7.5. ओके अब सब 7.5 वोल्ट. वेरी गुड. सॉरी. तो ये 7.5 is the right answer. Look at this. If we go by equations, ठीक है, सबसे पहले go by equations. दोनों के केस में डिस्टेंसेस सेम है ना. पहले वाले का क्या डिस्टेंस है? स्पीड इनटू टाइम. लेट्स से पहले वाले का टाइम t है. लेट्स से पहले वाले का टाइम t है. ओके, सो व्हाट विल इट बी? स्पीड इनटू टाइम. करेक्ट. दूसरे वाले का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 30 minutes less than the first. Driver of the second ambulance takes 30 minutes less than the first. 30 minutes less than the first, traveling at what? 10 kilometers per hour. So 10 into t में से 30 minutes, not 30 hours, 30 minutes है ना. तो 0.5 hours. Yes, both of them are equal. दोनों को equate कर लो, you will get your time. Time के साथ आप क्या ढूंढ सकते हो? Distance ढूंढ सकते हो है ना. तो equate these two, what will you get? 6 times t is equal to 10 times t minus 5. Yeah, so if you rephrase them, what would you get? You would get 4 times t is equal to 5. Yes, 4 times t is equal to 5. तो t क्या हो गया? 5/4. Yes, hours, क्योंकि अपन ने उसको hours में complete convert कर दिया था. अब इसके थ्रू can we use standard formula of finding the distance? Distance is what? Speed into time. So distance is 6 into 5/4. Which is how much? 30/4, 7.5 kilometers. Yes, this will be your standard equations wala method to find the answer of this question. Is there anything else you can use? Any other method that you can use, guys? Anyone? क्या हो रहा है यहाँ पे अभी? Look at this. Same distance, मतलब distance constant है ना? We'll be using somewhat of an a by n rule. Yes, somewhat of an a by n rule. तो क्या हो रहा है? When the speed increases, speed कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है? 6 से लेके 10 हो रहा. Speed is increasing from 6 to 10. That means there is an increase of what? 4/6, 2/3 increase हो रहा. So when your speed increases, this is speed. Speed increases by 2/3, then time should decrease by how much? 2/5 decrease है ना. This 2/5 decrease in the standard time, usual time, is basically this half an hour. That means you get your time to be equal to 5/4 hours. Yes, time मिल गया 5/4 hours. Can we use that to find the distance? We've already done that here. This is your answer. So 7.5 kilometers is the answer to this question. Cool. Then I guess you guys are understanding all of this and you guys are also enjoying this. तो वीडियो को like करना मत भूलना. And this Sunday, 7th Feb, this Sunday 12 PM to 1 PM, you know what time it is. What time it is? Combat. Yes, get your A games, bring your A games, bring your mortality moves there, right? Finish him करना है उधर. Don't forget to use my referral code Surana Live though. चलो, now let's talk about the next concept. Yeah, Milan, you can also use that. Basically difference in the time. Yes, Milan, definitely you can use that. चलो, अगला concept. Our next concept to discuss is what? Average speed. Yeah, now we always come across this concept, this confusion when let's say we're talking about speed. Okay, we have a scenario that you start from your house. Okay, this is the question में ये scenario है. Now you start from the house, you're sitting on your bike, you travel for about 30 kilometers from your home to your college. Yes, home to college 30 kilometers है, and you travel this at a speed of, let's say 40 kilometers per hour. Yes, now when I say this, do I mean that your constant speed throughout from home to college, पूरा distance, पूरा 30 किलोमीटर आप 40 पे चलाए?
मतलब गाड़ी पे बैठे, you sat on your vehicle, the moment you sat on your bike you started it at 40 only directly, no थोड़ा थोड़ा ऐसा जर्क मार के एक नीचे दो ऊपर दो एक नीचे, वो वाला झंझट नहीं करके शुरुआत में 30 में 40 पे चालू किया नहीं, राइट. ऑल्सो थ्रू आउट द वे यू वुड हैव हैड अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस, राइट. जाते जाते, अच्छा इंडिया की बात कर रहे हैं तो रोड से ज़्यादा खड्डे ज़्यादा होंगे, तो खड्डे, राइट. यू वुड हैव 2 रैंडम किड्स प्लेइंग अराउंड ऑन द रोड, क्योंकि उनको भी कुछ तूफानी करना है, उधर ही करना है रोड के बीच में, राइट. फिर आप जाते रहोगे तो एक मस्त कोई दिखने वाला मिल जाएगा. तो ऐसा तो नहीं है कि कोई मस्त चल रहा है और आप उनको मुड़ के भी ना देखें, मतलब 40 नहीं, मेरे को बोला गया कि 40 पे चलाना है, 40 पे चलाना, मैं स्लो ना करूंगा, फास्ट ना करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, मैं 40 पे ही चलाऊंगा. बीच में स्पीड ब्रेकर आ जाएगा, वहां पर भी 40 में चलाऊंगा. क्या हो जाएगा उसका आउटकम क्या हो जाएगा? आप पहुंच तो जाओगे कॉलेज, बट आप वन पीस में नहीं पहुंचोगे, है ना, राइट. सो व्हेन दे से 40 किलोमीटर्स एन आवर फॉर एन एंटायर जर्नी, व्हाट दे बेसिकली mean is what the average speed is 40 kilometers per hour, right. That means it doesn't matter what your momentary speed at that particular instant, right. Do you remember instantaneous velocity? आप लोगों को याद है क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी? या इट्स नॉट दैट. व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज व्हाट योर एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड इज गिवन बाय व्हाट? टोटल डिस्टेंस कवर्ड. द एंटायर जर्नी पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ, टोटल डिस्टेंस कवर्ड ओवर द टोटल टाइम टेकन टू डू सो. यस, whether you've taken short breaks in between, whether बीच में मामा आ गए, पांडु आ गए, बीच में आपको रुक के थोड़ा हेलमेट के लिए, मास्क वास्क के लिए देना लेन देन करना पड़ा, राइट. बीच में मम्मी फोन कर देंगे, बोला आते वक्त धनिया लेके आना, पुदीना नहीं, पिछली बार पुदीना लेके आ गया था, राइट. धनिया और पुदीना में फर्क नहीं पता और तुम यहाँ पे फार्मर्स का प्रोटेस्ट लड़ रहे हो, क्या बदतमीजी है, राइट. सो एवरेज स्पीड इज बेसिकली व्हाट? Total distance covered over the total time taken throughout the journey. Cool. Chalo, let's put this into use. Let's quickly try out a question. Here in front of you on the screen is a question. Quickly try this out. दही लेकर आना. तुम कॉलेज जाते हो कि तबेले में जाते हो? हैं? तुम गए वो अमूल के ऐड में जो आंटियां आती थी वो तो नहीं हो तुम, आयुष? दही लेके आना. 50/3, 80/3, 5p/3. निकुंज केमिस्ट्री से बाहर आओ. 5p, 3p, 2p नहीं करना इधर. 50/3, 50/3, 80/3. Okay, so we have 50/3. For some reason we also have 80/3. और कोई? Anyone else? $10 kilometers per hour. ब्यूटीफुल ऋषिकेश, यही डालना तुम. 10 किलोमीटर्स पर आवर नहीं होगा, वो कीपैड पे किलोमीटर्स पर आवर का नहीं होगा. तुम क्या करोगे? तुम मॉनिटर में खड्डा खोद देना, किलोमीटर पर आवर गए, फिर उस पर क्लिक कर देना. स्पीड नहीं पूछा है, ऋषिकेश, निकिता. क्वेश्चन देख लो गाइस पहले प्लीज. हम्बल रिक्वेस्ट है, बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है, कंगना मत बनो आप लोग प्लीज. 50/3, 50/3, 12. चलो ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस. हैमिल्टन can cover 20 kilometers in 1 hour and another 30 kilometers in 2 hours. What is the speed over the total distance? Yes. So देखो क्या बोल रहे हैं कि 20 kilometers. First things first. पहला का 20, first 20 kilometers is covered in what? 1 hour. And then another 30 kilometers is covered in 2 hours. ऐसा क्यों? मेरे को मत पूछो, मेरे को नहीं पता.
बीच में हैमिल्टन क्या कर रहा है, किधर रुक के क्या मस्करी कर रहा है, मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो क्या हो रहा है अभी, एवरेज स्पीड इज व्हाट, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर इज इक्वल टू 50 किलोमीटर्स, and total time taken to do so is what, 1 plus 2, 3 hours. So your average speed becomes what, 50 kilometers per hour. Okay, 50 by 3 मैं भी भूल गया, 50 by 3 kilometers per hour. Done. इसमें कोई किसी को शक, this can be approximated as what, 16.67 kilometers per hour. डन। इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कोई शक, एनीबॉडी? ओके, चलो अगला ट्राई करो जल्दी, क्विकली ट्राई दिस। इसमें चलो एक काम करते हैं, ऑप्शंस दे देते हैं। ऑप्शन ए 45 किलोमीटर्स पर आवर, ऑप्शन बी 42 kilometers per hour, ऑप्शन सी none of the above, ऑप्शन डी cannot be determined। आपको मैंने ये लाइफलाइन बिना मांगे दे दी है ऑप्शंस की, जाओ क्या याद रखोगे आप लोग। ओके, तो वेदांत, मिलन, अवयव, अक्षय, मृण्मय, सोमेश, श्वेता, निकुंज, इवांशी, अक्षय, ऑप्शन ए बोल रहे हैं कई लोग बोल रहे हैं ऑप्शन सी है नोटा, कोई लोग बोल रहे हैं ऑप्शन डी है कैनॉट बी डिटर्मिन्ड। ऑलराइट, now let's first look at this, for us to find out the average speed, what do we need? For us to find out average speed, what do we need? We need total distance, जो अपने पास है नहीं, we need total time, वो भी अपने पास है नहीं, but what do we have? We have speed which is nothing but individual distance by time, correct? Individual distance by time, ये भी क्या है, individual distance by time, agreed? Yes. So can we do something about it? कुछ कर सकते हैं क्या इसका, प्लीज है, प्लीज ट्राई करते हैं। पहले वाले का डिस्टेंस क्या होगा, चलो कोई भी एक टाइम ले लिया, वॉट एवर टाइम ही इज टेकन, वॉट एवर जो भी टाइम लिया, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, है ना। तो चलो इसको क्या करेंगे, 40 स्पीड इनटू टाइम, टी ले लो, t1 है। डिस्टेंस 2 क्या हो जाएगा, व्हाट इज डिस्टेंस 2? डिस्टेंस 2 विल बिकम 50 किलोमीटर्स एट t2 टाइम। अपने को नहीं पता t1 कितना है, t2 कितना है, क्या है, राइट? वी डोंट नो t1 t2 क्या है है ना। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस इज 40 टाइम्स t1 प्लस 50 टाइम्स t2 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2, है ना, एवरेज स्पीड। एग्रीड? What do you know here though? What do you know here for a fact? You know here for a fact that दोनों साइड में डिस्टेंस सेम है। क्यों? क्योंकि A to B 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न, मतलब क्या, A to B जो डिस्टेंस होगा वही सेम डिस्टेंस B to A भी होगा। एग्रीड? A to B का जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस D होगा B to A का। यस है कि नहीं? तो एक काम करते हैं, इधर क्या करेंगे, लेट्स डील विद डिस्टेंस, टाइम भूल जाओ, लेट्स डील विद डिस्टेंस नाउ, राइट? तो डिस्टेंस d1 बाई d2, d1 प्लस d2, दोनों डिस्टेंसेस सेम है, d1 d2 बोथ आर इक्वल, राइट? तो d ले लेंगे, d प्लस d बाई टाइम इज व्हाट, टाइम इज बेसिकली डिस्टेंस बाई स्पीड, है ना। तो d बाई 40 फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, d बाई 50। यस, so what do you have here, d by 40 plus d by 50, agreed?
So what do you end up getting here? You get 2 times d, नीचे भी d कॉमन ले लो, you have 1 by 40 plus 1 by 50, LCM ले लो, क्या हो जाएगा? This will become 9 by 200. Yes, ये आपका d कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा. What will you have? You will have 400 by 9. Agreed? Everybody? What is 400 by 9 in terms of kilometers per hour? 44.44 kilometers per hour. Yes. Always remember, before going for cannot be determined, before saying कि ना हमसे ना हो पाएगा भाई, नहीं करेंगे, नहीं बोलने के पहले फर्स्ट अपने ऑप्शंस देख लो, है ना, ट्राई कर लो पहले कि क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा. नंबर 2, 45 is arithmetic mean. 45 is what? Arithmetic mean. Arithmetic mean will never be equal to average speed. समझ में आ रहा है? For the same distance traveled, arithmetic mean will never be equal to the average speed. So here we have a very good concept of shortcut, where average speed when distances are equal. Yes, when distances are equal, what is the average speed? Average speed is nothing but 2 times AB by A plus B, where A and B are individual speeds. Got it? 2 times AB by A plus B. In this case, what do you get? 2 times 40 into 50 by 40 plus 50. What do you end up getting? You get 4000 by 90, which is nothing but 400 by 9, which is not equal to 45, it is equal to 44.44. ठीक है? Yes, no? ठीक है कि नहीं है? ठीक है. ओके. ठीक है? सुपर. डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक ऑन दिस वीडियो गाइस. ठीक है, लाइक कर लो, क्योंकि ये पूरा मैं आपको डेरिवेशन सब बता रहा हूँ, वरना मैं बोल देता ये शॉर्टकट है, चुपचाप ये यूज कर लो. ये डेरिवेशन है इसका, देख लो. डी कैंसिल हो रहा है. 2 कहाँ से आया? ये 2 पूछोगे, आप लोग पूछोगे कि सर ये 2 कहाँ से आया, बता दो प्लीज प्लीज बता दो सर, ये 2 क्यों है यहाँ पे? ये 2 इसके कारण है, क्योंकि डी. ठीक है, चलो ट्राई करो अभी जल्दी. फिजिक्स में भी तो था, फिजिक्स में तो बहुत कुछ था, आपको याद है वो सब? नहीं ना. फिजिक्स में तो बहुत कुछ था. फिजिक्स में बेचारा पेंडुलम को पूरा साल कभी कोई हाथ नहीं लगाता है. वो एक एक्सपेरिमेंट के लिए लोग पेंडुलम खेलते हैं. अरे अक्षय, ट्यूशन पढ़ाते हो तो आपको पता होगा, जो आपके पास पढ़ने आते हैं उनको पता है क्या? एवरीबडी से ए. इधर क्या हो रहा? दिस इज वन ऑफ योर रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन. हार्दिक दुआ साहब बोल रहे हैं ऑप्शन सी 70. बाकी सब 50 बोल रहे, दुआ साहब बोल रहे 70. और आईडी चलो ट्राई करेंगे फटाफट से. वेरी सिंपल क्वेश्चन. व्हाट्स द डील हियर? द डील हियर इज डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस. डिफरेंस इन द डिस्टेंसेस इज गिवन एज 20. यस, टाइम अपन को निकालना है. इफ यू कैन फिगर आउट द टाइम देन वी हैव आवर आंसर. एग्रीड? यस. तो चलो, यहां पे क्या है? टाइम्स आर इक्वल.
यस, ये वाला टाइम और ये वाला टाइम इक्वल है. टाइम इज व्हाट? डिस्टेंस बाय स्पीड. सो डिस्टेंस, ठीक है डिस्टेंस ही ले लो, टाइम निकल जाएगा. चलो ठीक है, टाइम ही कर लो. क्या है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस. वही नहीं पता, वही ढूंढना है. डिस्टेंस बाय व्हाट? 10 in case of walking. In case of skating would be how much? Distance plus 20 by 40. Yes, got to equate this. What will you get? You will get 4 times d is equal to 200, or d is equal to 50 kilometers. Yes. Now they're saying what? He would have traveled. Now I understand the reason why a lot of you have gone for 70 के सर 50 तो वॉकिंग पे हो गया, अपने को स्केटिंग पे देखना है, राइट? स्केटिंग है या वॉकिंग है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया? यस, लुक एट द लैंग्वेज यूज्ड. देव यूज्ड द वर्ड वुड हैव. मतलब वो किया नहीं है. अगर ऐसे होता तो कैसे होता? अगर ये बंदा वॉकिंग करने के बदले, है ना, धूम 3 के, धूम 2 के ऋतिक रोशन की तरह इसके नीचे अगर व्हील्स लगे होते हैं, धूम मचाले अगर करता तो कितना डिस्टेंस चलता? तो 20 एक्स्ट्रा किलोमीटर चलता. वो कर नहीं रहा है, वो पैदल चल रहा है जा रहा, तो इसका क्या मतलब हो गया? द आंसर इज 50 नॉट 70. यस, 70 इफ दे 70 इफ दे स्पेसिफिकली आस्क फॉर स्केटिंग. ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्विकली ट्राई दिस. ये बाजू वाले का लड़का उठा लाया है, ये लड़का डेविड जैसा नहीं दिख रहा. आयुष देखो, सबसे पहली बात जो आप कर रहे हो उसका नाम है रेसिज्म. ठीक है, आई विल नॉट विथस्टैंड और टॉलरेट रेसिज्म इन माई क्लासेस. कोई उस काले बंदे को नहीं बोलेगा कि तेरा नाम डेविड, सॉरी, कोई उस कलर्ड बंदे को नहीं बोलेगा कि हिज नेम कैन नॉट बी डेविड. हिज नेम कैन बी डेविड इफ ही वांट्स टू. डेविड धवन. एनीवे, मिलन, दैट्स जस्ट बेसिक इंडियन थिंग्स. वो इंडियन थिंग्स है. दैट्स बेसिकली ब्राउन मुंडे थिंग्स. Shweta says the answer is 9. Do we have any more takers for 9? Shri Krishnan Ganesh says the answer is 10. Sorry guys, मैंने जो स्टार्टिंग में स्ट्रेप्सिल्स खाए थे उसका असर चला गया. This is साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नंबर 1. स्ट्रेप्सिल्स 30 मिनट्स तक ही चलती है, उसके बाद नहीं. नोट टू माई सेल्फ, थोड़ा कम कंजूसी करो, 2 स्ट्रेप्सिल्स लेके आओ. आयुष says B, श्रेया says B, others? हाँ? हाँ जी गाइस, अदर्स? झंडू बाम लगा लो. वेरी नाइस अचल, थैंक यू.
एक काम करूंगा, बाजू में फार्मेसी खोल लूंगा मैं सोच रहा हूँ वो वेपराइजर ले लो, वो स्टीम वाला नहीं आता, बाफ वाला, वो ले लो। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो, तब तक मैं ऐसे पल्लू के नीचे जाके, घूंघट के नीचे जाके स्टीम लेके आ जाऊं, फील बेटर। अवयव सेज 9 अदर्स। रेड बुल मिलन नहीं, बस एक दिन किया था, अगले दिन जो पेट में जो विंग्स आए थे ना, बस। आयुष, उन लोगों ने मेरे को पैसा नहीं दिया उनका नाम लेने के लिए, सो नो। अच्छा, पैसा ही पैसा होगा। कोई कर रहा है कि नहीं गाइस? B10, A9, okay. So look at this, what are they saying? कैसा ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसा ये लोग क्या कर रहे हैं कि हर घंटे कितनी देर तक रुक रहे, फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज वन हैव टू स्टॉप पर आवर सच दैट द एवरेज स्पीड डिक्रीजेस. Yes, the average speed decreases. Look at this. Distance दोनों केसेस में, in both cases the distance are same, correct? जब वो 54 का एवरेज स्पीड होता है तब भी सेम डिस्टेंस है, अदरवाइज ऑल्सो चेन्नई से बैंगलोर का डिस्टेंस सेम ही है. या लेट्स से दैट द डिस्टेंस बिटवीन देम इज d kilometers. यस, देयर इज अ ड्रॉप इन व्हाट स्पीड. कितना ड्रॉप हो रहा? नॉर्मली विदाउट एनी स्टॉपेजेस, बिना कोई स्टॉपेजेस के 54 किलोमीटर्स पर आवर पे ये चला लेते हैं. यस, 54 किलोमीटर्स पर आवर के स्पीड पे ये चला लेते हैं. ओके, बट नाउ व्हाट्स हैपनिंग, द एवरेज स्पीड इज नाउ डिक्रीज टू व्हाट 45 किलोमीटर्स पर आवर. व्हाई? बिकॉज देयर इज स्टॉपेजेस. यस, तो ये देखो both cases the distance covered is the same. Yes, both cases distance covered is the same, right? So average speed into time is distance, है ना? Yes, so here 54 into time taken is the same as 45 into what? Time plus whatever is the stoppage. Yes, तो अब स्टॉपेज क्या हो जा रहा? दिस बिकम्स 9 times t becomes your stoppage. Yes, 9 times t becomes the stoppage. बट ये क्या है? पूरा जर्नी का है. दिस इज फॉर व्हाट? फॉर द एंटायर जर्नी. यस, नॉर्मली देख लो, नॉर्मली फिगर आउट, नॉर्मली 9 times the time taken is the total stoppage from here to here, but what they want is per hour ka stoppage for every hour. Yes, how do you figure out for every hour? एक सेकेंड, एक काम कर सकते हैं यहाँ पे, we can also assume the 270 kilometers. एक सेकेंड गाइस, हाँ सॉरी 45s, माय बैड. या सो टाइम इज इक्वल टू 5 times द स्टॉपेज, और स्टॉपेज इज इक्वल टू 1/5 ऑफ द टाइम, वॉट एवर, है ना? We can, if you want to assume the distance, you can also do that. Let's do that, it'll be better. Let's assume the distance is 270 kilometers. Yes, in the first case without any stoppage कितना टाइम लग रहा? टाइम taken will be 270,
for 54 kilometers is how much? 5 hours. Yes. In the other case time plus stoppage कितना हो रहा? 270 by 45. Yes, which is 30 by 5, 6 hours. That means there is 1 hour का स्टॉपेज है ओवरऑल. 1 hour का स्टॉपेज है ओवरऑल फॉर एवरी वॉट 6 hours traveled. For every 6 hours traveled, if there is 1 hour का stoppage, then for every 1 hour it will be 1/6 of an hour का stoppage. Yes, 1/6 of an hour का stoppage. 1/6 of an hour कितना हो जाएगा in terms of minutes into 60 minutes? This is once, this is 10 times 10 minutes. Got it? Yes. Done? हाँ कर सकते हो. एलिगेशन से भी हो जाएगा. एलिगेशन से भी हो जाएगा. रेशियो क्या निकलेगा? बट चलो एलिगेशन से इसके बारे में बाद में सोचेंगे. ये a/n से नहीं होगा. ये a/n से नहीं होगा. डिस्टेंस कांस्टेंट है, हो भी सकता है. 54 to 45 is basically 9. 9/45. 1/5 इंक्रीज पे 1/6 डिक्रीज हो गया. चलो ठीक है. 1/4 इंक्रीज होगा. 1/5 डिक्रीज है. 1/6 डिक्रीज है. 1/5 इंक्रीज होगा. a/n में लोचा हो रहा ऋतिक. बाद में करेंगे वो वाला. चलो ये वाला करो. सिद्धार्थ 2 times AB by A plus B है, बट ओवरऑल एवरेज निकाल के क्या करोगे आप? ओवरऑल एवरेज निकाल के क्या करोगे? चलो ठीक है, इसको होमवर्क ले लो. मेरे से भी नहीं हो रहा अभी. इसको होमवर्क ले लो गाइस. टेक अ स्क्रीनशॉट फटाफट से. इसका होमवर्क ले लो. ये अपन बाद में बात करेंगे. Yes, Tanisha, this is first class. Guys, get yourselves added. Get yourselves added to one of these batches. ये 10 से चालू हो रहा है, मेरा है. ये 13 से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें भी मैं ले रहा हूँ. दोनों में मैं क्वांट ले रहा हूँ. इसमें मैं टाइम एंड वर्क एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस कराऊंगा. इसमें मैं पूरा नंबर सिस्टम कराऊंगा. Yes, this is weekday batch. This is weekend batch. Guys, please don't forget to become a part of this. ये लेने के लिए आप either you can take plus or you can take iconic. ये रे differences. Iconic is just like plus, just that you will have a personal coach. There will be a separate OMAT के लिए preparation and guidance. You will also have experts guidelines and test analysis as a part of this. These are the prices for it. Please don't forget to use my referral code Surana Live to get yourselves a discount. Once you use my referral code, these become the prices of the plus ones. और iconic के लिए ये हो जाते हैं price once you use my referral code Surana Live. ठीक है? Yes, thank you very much guys for being a part of this session. I'll see you all tomorrow and I will get 2 whatever strepsil गिप्सिल जो भी है झंडू बाम मंडू बाम सब लेके बैठूंगा कल मैं. This issue won't happen tomorrow. Until then, keep yourself safe. Thank you very much. Thank you very much Vedant, Siddharth, Akshay.
Thank you guys. Bye bye. I'll see you all tomorrow. Until then, keep yourself safe and happy. Don't forget to hit like on this video. I'll see you all soon. Bye guys.